हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द 4 सब्जेक्ट, द डिटेल syllabus of the 4 subject, discussing the syllabus of the next 5 subjects. So let's get start the video. So the 6th subject is managerial economics, and the modules are: first module is nature, scope and definition, importance, applications to business decisions, profit maximization as business objectives, scale and revenue maximization objectives of business firm. Next module is demand and supply, in which introduction, determinants of demand and supply, demand function, demand and supply curves, laws of demand, elasticity of demand, utility analysis, cardinal and ordinal utility, equimarginal utility, curve and its properties, customer equilibrium with cardinal and ordinal approaches. So this is module 2. Talking about module 3, that is production analysis and cost, in which classification of cost, cost output relationship, economies of scale, break-even analysis, production process and function, one variable and two variable inputs, iso-quant and iso-cost, optimal factor combination. This all you will have to study in module 3. Talking about module 4, that is market, in which introduction, market types, perfect competition, imperfect competition, monopoly and oligopoly, demand curve model, equilibrium of a firm under perfect competition, price determination under different markets. So this all you will have to study. Talking about module 5, which is macroeconomic environment. In this you will have to study national income, that is concept, methods of measuring national income, problems in measuring national income, business cycle, phases, management of cycle fluctuations, inflation types, cause and measurements. So yeah, that's it. Moving towards the next subject, that is legal environment for business, and the first module is the Indian Contract Act 1872. So in which you'll have to study meaning and nature of contract, essentials of a valid contract, types of a contract, performance and discharge of a contract, remedies for breach of contract. Second module is special contracts, that is concepts, rights and duties of parties, guarantee concept, difference between entailment concept, sale duties and right of parties, pledge concept, duties and rights of parties. Third module is the Indian Partnership Act 1932, in which you will have to study the meaning and nature of partnership, essential elements of partnership, partner and firms, registrations of firm, types of patterns, types of partners, rights, duties and liabilities of partners, dissolution of partnership firm. Talking about the fourth module, that is the Companies Act 2013, to study meaning, silent features and types of company, difference between public and private company, formation of company, the Negotiable Instruments Act 1881, in which we'll have to study definition and characteristics of negotiable instruments, essentials of negotiable instruments, negotiation and discharge of negotiable instruments, crossing of a check, the Sale of Goods Act 1930, in which you'll have to study introduction and features, distinction between sale and agreement of sale, subject matter of contract of sale, and conditions and warranties. So that's it about legal. Now talking about the 2 chapters that is quite difficult, that you'll have to focus the most, is first is financial accounting and management. So now let's discuss the modules. First module is and functions of finance, role of finance manager, goal of financial management,
profit maximization versus wealth maximization, introduction to accountancy, then accounting principles and conventions, double entry system, journal, ledger, trial balance, and preparation of final account, then statement of changes in financial position, analysis of financial statement, profitability ratio, turnover ratio, liquidity ratio, leverage, and financial ratio, sensitivity analysis. Talking about the second module, the time value of money, future value of a single cash flow, present value of a single cash flow, present value of an uneven cash flow, multi-period compounding, capital budgeting decision, methods of appraisal, discounting and non-discounting techniques, profitability index, payback. All this you will have to study in second module. Third module is capital structure, relevance of capital structure decision, EBIT analysis, cost of capital, cost of preference capital, cost of equity capital, weightage average cost of capital, financial leverage, operating leverage, combined leverage. Moving towards the fourth module, that is concept and importance, factors of influencing working capital requirement, operating cycle and cash cycle, determinants of working capital policy, working capital financial policy, issues in working capital management. Now the fifth module is meaning and forms of dividends. So this is all that you will have to study in financial management. Now moving towards the next subject, that is data analysis and decision tools. So the first module is introduction, in which statistics, getting started with probability, random variables, probability density functions, mass functions, pairs of random variables, and joint density functions, random vectors. Second module is data types, measures of central tendency, measures of dispersion, measures of shape and relative location, application of measures of central tendency and dispersion of business and dispersion for business decision making. Third module is correlation and regression, in which concept, scatter diagram, coefficient and correlation, Carl Person and Sporman's rank correlation, regression analysis, regression lines and regression coefficients, business forecasting, methods of forecasting, time series analysis, components of time series analysis. Fourth module is sampling and sampling distribution, in which concept, random sampling and non-random sampling, sampling distribution, central limit theorem, sampling distribution of the mean, proportions, difference of means and proportions, central limit theory, estimation point, estimation and interval estimation. Fifth module is test of hypothesis, in which type 1 and type 2 errors, one-tailed and two-tailed test, chi-square test, analysis of variances, ANOVA table, one-way classification, statistical quality, control charts, introduction to one of the data, presentation tools, Excel mini tab, presentation of data, classification, tabulation, charts and diagrams. So this all you'll have to study in data analysis and decision tools. The book that you can refer is Business Statistics by J.K. Sharma. So now आप लोगों को सारे सिलेबस पता है, सारे सब्जेक्ट्स पता है. सो आई विल सजेस्ट कि आप नोट्स बनाना शुरू कर दो. डेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एंड डिसीजन एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल्स, इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. ये दो सब्जेक्ट्स भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप बुक ले लो, उससे आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे.
और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, टॉपिक वाइज, डिटेल टॉपिक वाइज अवेलेबल है। आप जाओ, सर्च करो, नोट्स बनाओ और पढ़ना शुरू कर दो। और ये डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप ज़रूर ही पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज ये थोड़ा टफ है। सो या दैट्स इट अबाउट द डिटेल सिलेबस। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। सो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि मेसरा में आपके 3 क्विजेज़ होते हैं और 10 मार्क्स ऑफ ईच, और 10 मार्क्स का असाइनमेंट होता है एंड 10 मार्क्स का प्रेजेंटेशन होता है फॉर ईच सब्जेक्ट्स। तो इंटरनल आपके 50 मार्क्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। आपको जैसे कि हर मॉड्यूल में हर सब्जेक्ट में 5 मॉड्यूल हैं। सो 3 मॉड्यूल आपका सारे 3 क्विजेंस में आएंगे। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल फॉर द फर्स्ट क्विज, सेकंड मॉड्यूल फॉर द सेकंड क्विज, थर्ड मॉड्यूल फॉर द थर्ड क्विज एंड फोर्थ मॉड्यूल, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी क्विज में 2 मॉड्यूल आ जाए, किसी क्विज में 3 मॉड्यूल आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन ओवरऑल होता है। सो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी टॉपिक आपको या तो खुद से चूज़ करना होता है या तो टीचर्स आपको सिलेक्ट करके देते हैं, उसमें आपको असाइनमेंट बनाना होता है, वो रिटन में होता है। देन प्रेजेंटेशन होता है, जो टॉपिक आप सिलेक्ट किए हो उस पर आपको एक पीपीटी बनाना होता है, उसको आपको पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट करना होता है, और एंड द बेसिस ऑफ दैट टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10। तो 10 मार्क्स फॉर असाइनमेंट, 10 मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड 30 मार्क्स फॉर क्विज। सो दिस 50 मार्क्स इज ऑफ योर इंटरनल मार्क्स। सेमेस्टर होता है 50 मार्क्स का, जिसमें आपका सारा 5 मॉड्यूल से क्वेश्चंस आता है। फ्रॉम ईच मॉड्यूल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सो वो होता है आपका एंड सेमेस्टर एंड द पासिंग मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 50 इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स। मतलब आपको इंटरनल 50 एंड एक्सटर्नल 50 में से मिला के 50 मार्क्स लाना होता है टू पास द एग्जाम। आई थिंक ये क्लियर होगा। आई हैव डिस्कस्ड द डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पासिंग नंबर, पासिंग स्कोर। सो आप अब बस पढ़ना शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर new beginning, and once again welcome to DIT Mesra. So yeah, that's it about today's video. If you like the video, do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.